Hello class 7th. Today we are discussing second part of this second chapter of Civics, and today we'll start with this question given here in this blue ink. In India, it is often said that we are unable to provide health services for all because the government does not have enough money and facilities. हाँ तो सही बात है, गवर्नमेंट के पास इनफ मनी और फैसिलिटीज़ नहीं है. सो आफ्टर रीडिंग द अबव लेफ्ट हैंड कॉलम, दिस कॉलम, ओके, डू यू थिंक दिस इज ट्रू? ओके, नाउ लेट्स डिस्कस, लेट्स रीड इट आउट. ओके, in order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक्स एक्सेट्रा. हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए ये सारी जो भी चीज़ें हैं, ये सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सारे ही चाहिए. ओके, दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज टू द पेशेंट्स. ओके, इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर्स, नर्स, qualified doctors and other health professionals who can advise, diagnose and treat illness. सही बात है. We also need the medicine and equipment that are necessary for treating patients, and these facilities are required to take care of us. Very true. So India has a large number of doctors, clinics and hospitals. The country also has considerable experience and knowledge in running a public healthcare system. This is a system of hospitals and health centers रन बाय गवर्नमेंट. बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ही हैं क्या इंडिया में? प्राइवेट नहीं है. ऑफ कोर्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, ठीक है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है. सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, हेल्थ के जो एक्सरे के या और जो जैसे सिटी स्कैन और वो सारे इक्विपमेंट्स, मशीन्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती हैं. ओके, it has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages. Okay, we will go into more detail on this later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical sciences whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country. Okay, the second column point out how poor the health situation in our country is. With all the, see here, it is a scene of a government hospital. So here you can see that whenever a patient is going for the treatment, he has to wait in long queues, okay, and wait for lot of time get wasted over there. Okay, so with all above positive developments, we are not able to provide proper healthcare facilities to people. Okay, our country has the money, knowledge and people with experience, but cannot make the necessary healthcare available to all. Okay, क्यों नहीं हो पा रही है ना? एक और हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं. एक स्टोरी है यहाँ पे. हाकिम शेख एक्चुअली एक लेबर था वो. ओके, मीन्स एग्रीकल्चरल लेबरर्स. ओके, खेत में काम करने वाला एक मजदूर था. हाकिम शेख वॉज ए मेंबर ऑफ द पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति. ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन है फार्मर्स की वेस्ट बंगाल में. सो ही वॉज अ मेंबर ऑफ दैट एंड ही वॉज अ फार्मर बेसिकली. One evening in 1992, he accidentally fell off a running train and suffered head injuries. Okay, he was in a very serious condition and needed immediate treatment. He was taken to government hospital in Kolkata, but they refused to admit him because they did not have a spare bed. वहाँ पे बेड खाली नहीं था, तो उसको एडमिट करने से उन्होंने मना कर दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने. Another hospital did not have the facility of the specialized doctor necessary for his treatment. ठीक है. In this way, he spent 14 hours in a critical state and was taken to 8 different government hospitals, but none of them admitted him. ठीक है. 8 हॉस्पिटल्स में उसको ले जाया गया, बट
None of them admitted. Finally, he was admitted in a private hospital. Okay, where he received treatment. He spent a lot of money on his treatment. Angry and upset over the different attitude of all the hospitals that refused to admit him, Hakim Sheikh and PBKMS, means the organization whose member he was, file a case in court. ओके, तो उन्होंने फिर बाद में कोर्ट केस कर दिया. बिल्कुल ठीक है. मेनी पीपल डू सच टाइप ऑफ थिंग्स बिकॉज दे रियली डोंट get the facilities which they really are in need of. Okay, now here one more this story is given here. Okay, story of Amman and Ranjan. Okay, both are friends. So here this story, children, this story you please go through this story. Okay, this story is about two friends. One is very rich and another one is poor. They both fell sick. The rich boy's father take him to in a private hospital where he got many tests, blood tests and many other investigations, and finally the doctor prescribes him so many medicines. Okay, but the another boy who was not that much rich, okay, his father takes him to the government hospital where he has to wait for a long queue. When doctor advises him for a blood test, another long queue they had to wait. Okay, and finally he gets his treatment, and when they talk about, then both of them one thinks that his hospital was nice, but they gave him many medicines and all the things were very costly, whereas the boy who was not rich, means the poor boy, thought that his treatment did not cost much. So this story you please go through. Okay, and after that another some questions are given here, that means here what problems do we face in private hospitals. So in private hospitals we do not face much problems. We are provided lot of services over there, but the things are very costly there. Okay, all the treatment which we are provided there and all the facilities, all the services, the main thing is that the cost is too much. Okay, very costly. Okay, so these kind of problems generally a poor person, okay, they face because they are not in situation to pay a lot money. Okay, now one more topic here, that public and private healthcare services. Okay, so public health services means hospitals run by government, they come under public healthcare services, and private health services और private health facilities में वो hospitals आते हैं जो कि run by private people. Okay, so this is the main difference between both of them. So the hospitals which are run by the government, they are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problems. Okay, from common illness to special services. विलेज लेवल पे भी होते हैं. विलेज लेवल पे जो होते हैं वो PHC होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर. ओके, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स. और द हेल्थ सर्विसेज इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीज़न. अब यहाँ पे इनको पब्लिक क्यों कहते हैं? बिकॉज दे फुलफिल द कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन. मीन्स सारी जितनी भी पब्लिक है एक कंट्री की, ठीक है, तो उस या फिर अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो उस स्टेट की
कम से कम जो भी पब्लिक है, सिटीजन्स हैं, उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. द गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स because government established. Also, the resources needed to run these services are obtained from money that we the public pay to government as taxes. हम जो टैक्स देते हैं फिर उसी टैक्स को गवर्नमेंट क्या करता है, इन हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल्स के इक्विपमेंट खरीदने में, हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को सैलरी देने में, उसमें स्पेंड करता है और लोगों को बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है. Hence, such facilities are meant for everyone. ठीक है, हर एक को यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो. ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज दैट इट इज़ मेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज आइदर फ्री और एट अ लो कॉस्ट. ऑलमोस्ट तो फ्री ही होती हैं, और अगर बहुत कुछ का चार्ज होता है तो बहुत लो कॉस्ट होती है, उसकी बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती है, सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट. ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज़ टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज सच एज टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा, और जैसे अभी एट प्रेजेंट जो कोरोना जो चल रहा है एपिडेमिक, तो जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी लोग, सभी गवर्नमेंट इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले रही हैं. ओके, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं. सो दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव. ठीक है, अभी जैसे गवर्नमेंट को पीपल का पार्टिसिपेशन तो चाहिए ही ना. गवर्नमेंट कंटिन्यूसली, गवर्नमेंट इज़ रिक्वेस्टिंग फ्रॉम ऑल द सिटीजन्स फॉर keeping social distancing. Okay, now public's role, what public's role is? Public's role to obey government's instructions. Okay, for example, when taking up a campaign to see that mosquitoes do not breed in water coolers, rooftops, etc. So this has to be done for all houses in that area. ठीक है, गवर्नमेंट जनरली इस तरह से अवेयरनेस कैंपेन चलाती है कि टीवी पे भी बहुत सारे ऐड आते हैं. ठीक है, बहुत सारे उसी तरह से रेडियो पे ऐड होते हैं. ठीक है, वॉल पे अगर बाहर जाते हैं तो वॉल पे एड्स होते हैं. तो बहुत सारे ऐड से पीपल को जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं. ओके, सो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट to ensure the welfare for the people and provide health care facilities to all. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट की ये प्राइमरी ड्यूटी है. ठीक है, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन इट्स एरिया. द गवर्नमेंट मस्ट safeguard the right to life of every person. The court said that difficulty that Hakim Sheikh had to face could have cost him his life. ठीक है, हाकिम शेख जो हमने अभी पीछे एग्जाम्पल देखा. ठीक है, फिर कोर्ट ने क्या उसके लिए क्या कहा, दैट हाकिम शेख उस वजह से उसकी जान भी जा सकती थी. इफ़ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ नॉट बीइंग गिवन. ठीक है, जो कि लाइफ को जो सिक्योर करने का, लाइफ को प्रोटेक्ट करने का जो काम हॉस्पिटल्स का है, वो हॉस्पिटल्स ने नहीं किया. द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग treatment in emergency situations. Hospitals and medical staff must fulfill their duty of providing the necessary treatment. Hakim Sheikh was denied treatment at various government hospitals. Therefore, court asked the state government to give him the money that he had spent on his treatment. ठीक है, क्योंकि 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने उसको मना किया ट्रीट करने से, तो फिर गवर्नमेंट ने कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को क्या ऑर्डर दिया कि जितनी भी मनी उसने अपने ट्रीटमेंट पे स्पेंड करी है उसको वापस दी जाए. ओके, ये तो हो गई पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात. अब बात करते हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़. सो दिस इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ
facilities that exist in our country. हमारी country में बहुत सारे private hospitals भी हैं. Large number of doctors run their own private clinics. In rural areas, one finds registered medical practitioners. जैसे rural areas में भी RMP डॉक्टर है. कई बार हमने बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि वो तो RMP डॉक्टर है. RMP डॉक्टर मीन्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. ठीक है, जो कि मेडिकल काउंसिल से जो रजिस्टर्ड होते हैं और वो एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए परमिटेड होते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट होता है. अर्बन एरियाज मीन्स सिटी एरियाज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मेनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज. मतलब कोई जैसे आर्थोपेडिक है, कोई पीडियाट्रिशियन है, कोई गायनोकोलॉजिस्ट है, ठीक है, कोई आई डॉक्टर है. मेनी means they are providing specialized services. There are hospitals and nursing homes that are privately owned. There are many laboratories that do tests and offer special facilities such as X-ray, ultrasound, etc. There are also shops from where we buy medicines. Okay. So as the name suggests, private health facilities are not owned or controlled by government. ठीक है, प्राइवेट पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता. Unlike the public health services, in private facilities, patients have to pay a lot of money for every service that they use. Today, the presence of private facilities can be seen all around. In fact, now there are large companies that run hospitals and some are engaged in manufacturing and selling medicines. Medical shops are found in every corner of the country. Today we end our discussion here. Tomorrow we'll continue the chapter. Okay? Till then, good luck.